champs, कैसे हैं आप? So every other day I get this request from any one of you कि dimensions of business environment या elements of business environment आपको case studies में identify करना बहुत difficult लगता है, बहुत mistakes होती है इस topic में. So I thought once and for all इस problem को हम ख़त्म कर देते हैं. So this video is completely dedicated to this टॉपिक एंड मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज सॉल्व करने में. ऑल्सो चैम्प्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें हमारी कम्युनिटी क्वेस्ट में. सिंपली आपको चैनल पे जो एक कम्युनिटी टैब दिखता है उस पर क्लिक करें. आपको वहाँ पे एवरी डे मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड. आप उनको आंसर करें, आपकी इससे प्रैक्टिस होगी. वन मोर थिंग चैम्प्स, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें. आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कम्युनिटी क्वेस्ट से रिलेटेड भी और वैसे भी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उससे रिलेटेड भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस प्रॉब्लम को हम अब ख़त्म कर देंगे. चलो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू डायमेंशंस. ठीक है, दो पहचाननी है और आपको पता है निमोनिक मैंने बताया हुआ है स्लेप्ट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल. पढ़ते हैं केस स्टडी. महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल्स. They conducted a survey to find out consumer preference for such vegetables. वैसे यहाँ से आइडिया हो रहा है consumer preference या लोगों की consumption habits या लोगों का lifestyle, ये social environment का part होते हैं. They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found that 90% of the households were searching for its alternatives. तो लोग आजकल बहुत कंसर्न हैं अपनी हेल्थ को लेकर. उनको लगता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल्स में वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं. दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स लाइक ऑर्गेनिक फूड. सो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सोशल एनवायरनमेंट है. कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो रही हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. ओके, आगे देखते हैं. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in new technology to grow chemical-free vegetables. तो उन्होंने contact किया कुछ agriculture experts को जिन्होंने farmers को train किया new technology में जिससे वो chemical-free vegetables grow कर सकें. तो of course new technology word आ गया तो technological है. Quite easy. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो डायमेंशंस मतलब एक से ज़्यादा आपको फाइंड आउट करनी है. विच चेंजेस इन कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल. अभी हम बात कर रहे थे कंजम्पशन हैबिट्स सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. आगे देखते हैं. नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस. On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website. Okay, तो दिवाली का समय है और वो चॉकलेट्स बेच रहे हैं अट्रैक्टिव पैकेजेस में. ये तो क्लियर हो जाता है कि फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ये सब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. और उन्होंने एक वेबसाइट भी क्रिएट की है, chocolava.com. वेबसाइट है तो डेफिनेटली जहाँ भी वेबसाइट आ गया तो वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. राइट, दिवाली की बात हो रही है, वेबसाइट की बात हो रही है, तो दिस इज सोशल एंड दिस इज टेक्नोलॉजिकल. आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखिए, केस स्टडीज़ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने कंफर्टेबल होंगे. व्हाट फीडबैक डू आई गेट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, जैसे जो अभी न्यू सेशन में आए हैं और जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, कि मैम जैसे टेस्ट हुआ स्कूल में, ऑनलाइन टेस्ट्स भी हो रहे हैं बच्चों के, तो हम बहुत कंफर्टेबल थे केस स्टडीज़ के साथ. हमें पता था कैसे आंसर देना है बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप कंफर्टेबल होंगे ना केस स्टडीज़ के साथ. सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस. अगेन मोर देन वन. ठीक है, डिस्कस्ड इन द अबव केस. देखिए चैम्प्स, कई बार क्या होता है कि सिर्फ जो ऊपर हाईलाइटेड है, जो आपको दिख रही है डायमेंशन, सिर्फ वही आंसर नहीं होगा. कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है, आइडेंटिफाई द डायमेंशंस विच हैज़ रिजल्टेड इन दिस.
राइट तो उसमें आपको बहुत केयरफुल होना है. यहाँ तो सिंपली लिखा है डिस्कस्ड अबव, तो जो भी ऊपर हमें दिखाई दे रही है. A recent rate cut in interest on loans announced by the banks encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. So this is a student called Amit. उसने लोन लिया है बैंक से क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स कम हो गए हैं. तो आई थिंक ये आप गेस कर सकते हैं. दिस इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. वेन एवर वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, मनी सप्लाई, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो उसने लोन लिया और उसने कार्स डेवलप की है जिससे गार्बेज से फ्यूल जनरेट होता है, जिसके लिए he developed such a car and exhibited it in science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded the first prize for his invention. Scientific inventions, innovations, क्या होता है ये? Technological environment. Simple. So champs, आप क्या कर सकते हैं? वीडियो पॉज कीजिए, PDF देखिए, खुद आंसर कीजिए और फिर आंसर्स चेक कीजिए वीडियो से. राइट, आगे बढ़ते हैं. Okay champs, let's look at the next case study. Identify and explain the dimensions. तो ध्यान रखिए explain भी करना है, right? Accent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. Now, यही होता है कि political government का जो party in power है उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सर्टेन बिजनेसेस, जैसे अगर वो कोई सब्सिडी देती है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी कम करती है, तो ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होते हैं कि उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज कम की है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, तो ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड शो कर रहा है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर बिजनेस. तो दिस इज पॉलिटिकल. ओके. The company appointed retailers in India who had direct online links. So I think it's easy for you to guess कि online जब आ गया तो technological है. Websites, online, all this form a part of technological environment. आगे देखते हैं champs. So state the dimension of business environment. तो एक ही dimension बतानी है. And principle of management जो आप मुझे बताएंगे comment section में. ठीक है, dimension हम discuss करते हैं अभी. So the case study is, after completing her MBA, Beni took up a job with a multinational company named Forshio. The company paid good salaries and perks to its employees. The wages were within the paying capacity of the company that provided the employees with reasonable standard of living. Principle of management के लिए आपको proper hint मिल गया यहाँ पे. The company also had a good work culture and the behavior of superiors was very good towards their subordinates. Beni was very happy in this organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meals. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. तो कुछ आइडिया तो मिल रहा है कौन से डायमेंशन की बात हो रही है, बट आगे देखते हैं. She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in other companies. This was because of increase in the number of working women and non-availability of hygienic home-cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office goers at a reasonable price. बात हो रही है हेल्थ की, बात हो रही है मोर नंबर ऑफ women वर्किंग, बात हो रही है खाने की. सो दिस इज सोशल एनवायरनमेंट. जैसे मैं आपको आपकी बुक में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाती हूँ, देखी होगी आपने शायद. हियर देखिए, यहाँ पे क्या है कि लिखा है दैट मोर women are participating in the workforce, more women are taking up jobs. तो इससे फैशन इंडस्ट्री में भी डिमांड बढ़ी है, क्लोथ्स की, गैजेट्स की भी. और यहाँ पे देखिए फूड हैबिट्स भी चेंज हुई हैं. देयर इज अ मोर शिफ्ट टुवर्ड्स पैकेज्ड फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी डिमांड बढ़ी है. सो दिस इज सोशल एनवायरनमेंट. तो सोशल एनवायरनमेंट है दैट मोर women are participating and बात हो रही है हेल्थ की भी. सो आई थिंक इट्स easy to guess this is social dimension, right? Okay champs, आगे देखते हैं.
Identify the business environment under 3 different dimensions. तो 3 dimensions बतानी है by quoting from the above paragraph. Okay. As per the directions issued by the Supreme Court. Now orders या directions given by the court judgments, ये सब legal environment का part होते हैं. The administrative orders issued by government also. The government passed an order to ban the sale of tobacco products within the area of 200 meters of all educational institutes. तो यहाँ तक तो हमें definitely legal environment लग रहा है. Okay. Its consumption is injurious to health, social environment. People are becoming more conscious about their health and fitness. Of course, social trends are changing, consumption habits are changing. So ये है social, and this indicates the government's attitude towards this business. So government का attitude towards certain businesses is definitely political environment. I think this was an easy one. What do you think? Okay, आगे चलते हैं. The court passed an order that all schools must have water purifiers for the school children. Court passed an order, definitely ये तो legal है. Question नहीं पढ़ा मैंने. Identify the different dimensions by quoting the lines. Okay, तो ये तो legal हो गया. आगे देखते हैं. Society in general is more concerned about quality of life. Quality of life को लेके जब concern होता है तो this is definitely social. Lifestyle, social trends, health and fitness, consumer preferences. Then innovative techniques are being developed to manufacture water purifiers at competitive rates. Very easy. Technological environment. Innovation. Right. Incomes are rising. Children are drinking purified water at their homes as well. Incomes are rising. Personal disposable income, interest rates, inflation rates, ये सब economic environment का part होते हैं. Right? So this is economic environment. जो भी आप economics में पढ़ते हो basically वो economic environment में आते हैं, जैसे money supply, GDP, planned output, everything. The government is also showing a positive attitude towards the business of water purification. Again, government का attitude towards certain businesses is definitely political. Right? आगे चलते हैं. Okay, this is a short one. Identify the environmental factor which led to the rise. अब देखो environmental factor भी dimension या element ही है. Let us see. Just after the declaration of the results of Lok Sabha elections, the BSc Sensex rose by 2100 points in a day. वैसे तो यहाँ 2 dimensions mentioned है. एक तो results of elections is definitely political. इलेक्शन का रिजल्ट है तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है. इस वजह से जो सेंसेक्स है वो बढ़ गया, और स्टॉक मार्केट इंडिसेस, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं. राइट? तो यहाँ तो 2 डायमेंशंस हैं, एक पॉलिटिकल एक इकोनॉमिक. बट आपको कौन सा बताना है? विच लेड टू द राइज. मतलब स्टॉक मार्केट में राइज होने का जो कारण है, जो कॉज है, वो तो इलेक्शंस है, और वो क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो हमें बहुत केयरफुली केस स्टडी पढ़नी है. विच लेड टू द राइज. सो दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Identify and explain the various dimensions of business environment being referred to in the above case. This is quite an interesting case study, and हो सकता है आप इसी से related project भी बनाएं. Smart Cities Mission is a urban renewal and retrofitting program by the Government of India. Retrofitting मतलब to adapt to new purpose and needs. आजकल requirement बदल गई है. Cities को भी अपने आप को smart करना पड़ेगा. अदरवाइज बर्डन फिर वही कुछ ही सिटीज़ पे रह जाएगा. जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सारे लोग यहीं पे बस जाएंगे क्योंकि यहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहीं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेनिटीज़ है. बट इससे कुछ ही सिटीज़ पे प्रेशर हो जाएगा. सो वी नीड टू डेवलप अदर सिटीज़ ऑल्सो एज स्मार्ट सिटीज़. राइट? With a mission to develop 100 cities across the country, making them citizen friendly and sustainable, the Union Ministry of Urban Development is responsible for implementing the mission in collaboration with the state governments of the respective cities.
आई थिंक यहाँ पे एक इन्वायरमेंट तो आपको पता लग ही गया है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, राइट. Cities will be selected based on the Smart Cities Challenge, where cities will compete in a country-wide competition to obtain the benefits from this mission. It is a 5-year program where all of Indian states and union territories are participating except West Bengal, yes, by nominating at least one city for the Smart Cities Challenge. Each city will create a corporate company headed by a full-time CEO to implement the Smart Cities mission, with the government announcing an outlay of around $8 billion for creating 100 smart cities. Many international companies may express interest to collaborate with Indian companies and the government to build infrastructure, transportation, and other greenfield projects, right? So smart cities में एक जो prominent factor है, that is using technology, using innovation in so many factors like digitization. उस city में robust IT connectivity होनी चाहिए, solid waste management, so technology का तो definite use होगा ही. So there is definitely involvement of technological environment. And अभी हमने बात की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो ये है ही, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट फंड्स भी एलोकेट कर रही है इसके लिए. और देखिए इकोनॉमिक भी है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी, जब फॉरेन कंपनीज आएंगी, इवन इफ आई शो यू हियर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देयर इज हियर एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. एंड ऑफ कोर्स अगर हम सिटीजन फ्रेंडली बना रहे हैं, सस्टेनेबल बना रहे हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो बढ़ेगी. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो, बट वो थोड़ा इनडायरेक्ट है, राइट. तो अगर ये केस स्टडी लेट्स से 4 मार्क्स की है या 4 डायमेंशंस बतानी है, तो वी विल इंक्लूड सोशल, अदरवाइज दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस. ओके ओके चैम्प्स, लेट्स मूव ऑन. Identify and explain any 2 dimensions of business environment. So 2 we have to tell. Bitcoin, again very interesting. Bitcoin is a cryptocurrency and worldwide payment system. It is the first decentralized digital currency. देखिए अगर digital word आ गया है तो definitely technological. The medium of exchange is stored in your maybe smartphone or laptop, right? So this is digital currency. Definitely involvement of technological environment, as the system works without a central bank or single administrator. The network is peer-to-peer and transactions take place between users directly without any intermediary. हो सकता है कल को बैंक्स की ज़रूरत भी ना पड़े अगर इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज ही चल पड़े. These transactions are verified by network nodes through the use of cryptography, definitely technology, and recorded in a public distributed ledger called a blockchain. Bitcoin was invented by an unknown person or a group of people under the name Satoshi Nakamoto and released as open source software in 2009. The money can only be tracked when it is converted into cash. This public way of managing transactions has created a possibility of a huge revolution in the banking sector across the world. So if they're talking about banks, they're talking about economic environment, right? So 2 dimensions that are involved, definitely technological, digital currency है, and economic environment पे इसका impact ज़रूर पड़ भी रहा है और पड़ेगा भी if it continues to survive. Let's look at this one. Identify and explain the various dimensions of business environment being referred. Okay. India's education system is under pressure to adapt to a rapidly changing world. I think this cannot be more relevant than in today's time. To keep pace with the global paradigm shift brought about by digitization, our education system is adopting digital resources and methodologies to improve accessibility, quality and scale. I think this case study is not just relevant for you from exam point of view, but you can definitely relate to it. Digitization in education system. अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम या लिटरेसी रेट की, तो ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. आई विल शो यू दिस इन योर बुक.
here, एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट्स. और डिजिटाइजेशन की जहाँ तक बात है, मेथडोलॉजीज, डिजिटल रिसोर्सेज तो टेक्नोलॉजिकल है. आगे देखते हैं. Nearly 89% of Generation Z students prioritize using digital media like videos to enhance their education, what you're doing right now. And 63% of their teachers believe in including more technology-focused interactive sessions to better prepare students. Not only organizations, but the government is also investing heavily on bettering the education system, be it with revamping the national education policy, launching Skill India initiative, etc. So I think it's very easy for you to understand the dimensions included here. Definitely social, क्योंकि education system की बात हो रही है. टेक्नोलॉजिकल तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और गवर्नमेंट का भी पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ओके, आगे चलते हैं. Then, identify and explain any 3 dimensions of business environment being referred to in the above case, or outline the concept of demonetization. ठीक है, demonetization आपको cover करना है. The act of scrapping units of 500 and 1000 denomination notes and seizing them to be legal tender, right? And it was introduced on 8th November 2016. I think you are aware of that. Paytm is an Indian e-payment and e-commerce brand based out of Delhi NCR, India. यहीं से एक तो clear हो रहा है, e-payments, technological environment. Launched in August 2010, it is a consumer brand of parent company 197 Communications. The name is an acronym for Payment Through Mobile. The company employs over 13,000 employees as of January 2017 and has 3 million offline merchants across India. It also operates the Paytm payment gateway and the payment wallet. Starting from March 2017, Paytm expanded its services to Canada with the launch of Paytm Canada. Paytm has targeted each and every person irrespective of age, income, gender or status as its target customer, because it wants to penetrate into every nook and corner of India. Some of its major competitors are Jio Money, Airtel Money, Mobivic and Freecharge. It acts as a portal to shop for multiple products from apparel to electronic items. The government is propagating cashless economy system, and this has helped Paytm in its endeavor. In the year 2015, RBI granted it a license to start first payment bank in India. Demonetization of currency notes has also worked heavily in the favor of the company. Of course, digitization, using mobile wallets like this. Demonetization के बाद ज़्यादा popular हुए, has led to substantial increase in active users. Okay champs, तो इसमें हमें lines भी quote करनी है. सो जैसे यहाँ से ही पता लग रहा है टेक्नोलॉजिकल. वैसे तो देर आर अ लॉट ऑफ लाइन्स जिसमें टेक्नोलॉजिकल हमें पता लग रहा है. एंड देन गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी इसकी तरफ है कि हमें कैशलेस इकोनॉमी बनानी है. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. एंड आरबीआई ने जब लाइसेंस दिया, सो दैट इज लाइक एन ऑर्डर कि ओके नाउ यू कैन स्टार्ट. सो डोंट यू थिंक दिस इज लीगल एनवायरनमेंट? Yes, this is a legal environment, issuing directives, right? So 3 environments are included here: technological, political और legal. So बहुत से चैम्प्स पूछते हैं demonetization अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन में हमें कौन सा environment लिखना है. एक्चुअली एक environment नहीं है, बहुत सारे इसमें involved हैं. तो देखते हैं. Identify and explain the various dimensions of business environment which relate to the above mentioned case. On 8th November 2016, सबको याद है वो रात, around 8 to 8:30 p.m., the government of India announced the demonetization, making all rupees 500 and rupees 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series invalid past midnight. The government claimed that the action would curtail the use of illicit and counterfeit cash to fund illegal activities and terrorism. ठीक है, ये आप objectives में भी पढ़ते हैं. The BSE Sensex and Nifty 50 stock indices
fell over 6% on the day after the announcement. The decision was heavily criticized by the members of the opposition parties, leading to debates in both houses of parliament and triggering unorganized protests against the government in several places across India. People seeking to exchange their banknotes had to stand in lengthy queues, and several deaths were linked to the inconveniences caused due to the rush to exchange cash. After demonetization, the demand for point of sale or card swipe machines has increased. E-payment options like Paytm have also seen a rise. So many dimensions are included here. Rupees 500 और rupees 1000 की जो करेंसी नोट्स हैं, they will cease to be legal tenders. तो यहाँ पे तो एक लीगल एनवायरनमेंट का भी तो इन्वॉल्वमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट भी तो है, तो लीगल एनवायरनमेंट भी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है. यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज्ड दिस मूव. देन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ा, इवन सम पीपल passed away due to the inconveniences. Social environment and e-payment options ज़्यादा popular हो गई, so technological environment. So every dimension is included here. So I hope you understood this. Okay champs, आगे बात करते हैं. Identify the various dimensions which relate to the above mentioned case. Post demonetization की भी बात कर ले. In a further push to cashless economy, the Central Cabinet has recently approved the ordinance for paying wages via electronic means. Accordingly, the government approved to amend Section 6 of the Payment of Wages Act 1936 to allow employers of certain industries to make payment through electronic mode and checks. The new ordinance will be applicable to the public sector. Definitely अगर किसी एक्ट की बात हो रही है, एक्ट में अमेंडमेंट की है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट है. ओके, एंड कैशलेस इकोनॉमी डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है. क्वाइट सिंपल इट इज. ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस बीइंग रेफर्ड टू बाय कोटिंग लाइंस. ओके, Make in India is an initiative launched by the Government of India to encourage national and multinational companies to manufacture their products in India. It focuses on job creation and skill enhancement and is in 25 sectors of the economy. Under the initiative, brochures on these sectors and a web portal were released. The initiative aims at high quality standards and minimizing the impact on the environment. It also seeks to attract foreign capital investment in India. Okay champs, तो यहाँ पे आपको dimensions बतानी है. Launched by the Government of India, political environment, ये government का attitude दिखाता है towards this particular initiative. Then यहाँ पे web portal की बात हो रही है. This is technological environment. Attracting foreign capital investment in India, definitely economic environment. और अगर आपको एक और बताना है तो the impact on the environment, what do you think that is? That is social environment. Social, right? So champs, depend करेगा जैसे कितने marks का question है. ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक है, बट अगर जैसे 4 डायमेंशंस बतानी हो, देन यू कैन डेफिनेटली राइट सोशल एनवायरनमेंट एज देव टॉक्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, राइट? ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Okay, in the year 2016, the state government of Kerala had made it mandatory for Anganwadis, hostels and canteens in educational institutions to secure the Food Safety and Standards Authority of India FSSAI license to ensure food safety. As the educational institutions also get categorized as food business operators in the event of the annual turnover of the hostels, they run exceeding rupees 12 lakhs per annum. Right, तो बात हो रही है कि केरला में they made it mandatory कि
आपको जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे हॉस्टल्स कैंटीन्स में, तो FSSAI मार्क उस पर होना चाहिए. डेफिनेटली गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो है, और मैंडेटरी बोला है तो दिस इज एन ऑर्डर, तो यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट भी है, राइट. So two dimensions that we would write about, one is political and one is legal. Okay, let's move on. Identify the various dimensions being referred to in by quoting lines. Anurag aspires to work with a socially and environmentally committed company, as he does not want to work just for monetary benefits, but also the brand value of the company he works for in the society matters to him. Therefore, he joined Cerebra Integrated Technologies, a Bangalore-based infotech company. The company has built India's largest e-waste recycling plant. The company strives to be one of the leading players in this business, which has huge potential, not only in terms of generating huge revenues and profits, but also wants to contribute to the environment issues that have become crucial worldwide. The company sees big business in the mountains of e-waste in Bangalore, which produces 2 lakh tons of e-waste a year. The company plans to make its millions by extracting metals such as gold and platinum from the e-waste piling up in the city. As the mobile phone, for example, is made up of a combination of rare and precious metals, it contains 250 mg of silver, 24 mg of gold and 9 mg of palladium, while a laptop has 1000 mg of silver, 220 mg of gold and 500 grams of copper. To start the business, the company has obtained a license from KSPCB, Karnataka State Pollution Control Board. So the good thing is कि ये case studies बहुत ही रियल टॉपिक्स पे हैं, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं, और CBSE भी इसी तरह की केस स्टडीज आपसे पूछता है. ओके, सो कौन से एनवायरनमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो सोशल एनवायरनमेंट तो है ही. देन यहाँ पे ई वेस्ट की बात हो रही है जो टेक्नोलॉजी से ओरिजिनेट होता है, लाइक डिवाइसेस का जो वेस्ट है, जैसे बात की उन्होंने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स. So of course we are talking about technological environment also, and जो कंपनी ने यहाँ पे लाइसेंस लिया है that is legal environment, right? और लाइन्स आप कोड करके बताइए. ओके चैम्स, आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. ओ दिस इज चैप्टर 1 नाउ. निमोनिक क्या हमने बनाया हुआ है? PMGGCID. परवेसिव, मल्टीडायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस, इंटेंजिबल और डायनेमिक फंक्शन. तो फीचर बताना है, फिर डायमेंशन भी बतानी है ऑफ कोर्स, एंड एक प्रिंसिपल भी बताना है ऑफ जनरल मैनेजमेंट, मतलब फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से कोई बताना है. तो देखते हैं. भरत इज रनिंग एन आइसक्रीम पार्लर इन अ लोकल मार्केट. Keeping in mind the changing perceptions about health among the people, one of his employees, Abhiraj, suggests to him that they should introduce a range of flavored yogurt. आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो आइसक्रीम की जगह अगर हम फ्लेवर्ड योगर्ट्स भी इंट्रोड्यूस करें, नॉट आइसक्रीम की जगह बट अलॉन्ग विद दैट, तो अच्छा रहेगा. Bharat accepts his suggestion. As a result, both the image and the profitability of his business increases. Feature of management is dynamic because of changing perceptions. Management is a dynamic function. Then, dimension is social. Consumer की preferences बदल रही हैं. Health के बारे में they are more concerned. So this is social. And one of the principles जो यहाँ पे है कि वो अपने एम्प्लॉय की सजेशंस ले रहा है, तो फ्यूल ने ये बात हमें बताई है इनिशिएटिव में दैट एम्प्लॉय सजेशंस शुड बी टेकन सीरियसली, एंड अगर उन सजेशन से कुछ सब्सटैंशियल कॉस्ट या टाइम रिडक्शन होती है तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए. आगे देखते हैं. Explain why are all the elements of business environment considered to be closely interrelated. तो ये तो आपका one of the features of business environment है, वहाँ से आपको लिखना है कि सारी dimensions interrelated होती है. एक environment पे फर्क पड़ता है तो उससे दूसरे environment पे भी फर्क पड़ता है, right? जैसे हमने demonetization में भी देखा how every environment was interrelated.
Name any two related dimensions of business environment. Okay. As a result of the decision by Britain to exit European Union, the new trade agreements will come into force from the EU, as it accounts for 35 to 40% of auto component exports from India. Tata Motors owned Britain's largest car maker, Jaguar Land Rover, has been in Britain for 3 decades and makes 4,75,000 cars a year in the country, of which most of them are exported inside the European Union and beyond. JLR estimates that their annual profit could be cut by £1 billion by the year 2020. ओके चैम्प्स, तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने को ब्रेक्सिट कहते हैं, एंड इसमें लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. आई पुट इट समवेयर हियर, यू कैन सी कि एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, राइट. सो इसमें लीगल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं. ओके, मूविंग ऑन. Let us read at what they've asked. Nature of management which is being reflected. Management as an art, as a science, as a profession. Okay. Name and explain the related principle of scientific management. Okay. Out of the 4, science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, or development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. State the related dimensions of business environment. Okay. Let us see. After completing his education, Arun joins his father in their family business of manufacturing cookware. As a businessman, his father is rigid in his approach and has fixed ideas about various issues. He tends to maintain a distance from the factory workers. We're talking about the father. However, Arun is more receptive to the needs of the workers and doesn't seem to believe in any class differences. He believes that the prosperity of their business greatly depends upon the prosperity of their workers and vice versa. Let me tell you, ये key line है harmony not discord की. So that is the principle. At the same time, he has good understanding of the business environment. Okay. Therefore, he introduces a new range of green pans that provide a healthy cooking surface, as they are manufactured with all ceramic or silicon coating and are considered safer than the traditional petroleum-based non-stick surfaces, which may contain toxic substances. Although the new cookware range is highly priced, he expects a ready market for it, as both the purchasing power of people and their preference for better quality products have increased over the years. ओके चैम्प, सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे फादर की अप्रोच डिफरेंट है और सन की अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो इससे पता लगता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, राइट. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सो डेफिनेटली द नेचर इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट, राइट. एंड अगर बात करें डायमेंशंस की, जहाँ पे बात हो रही है परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कि लोगों की आजकल इनकम बढ़ गई है. देन देयर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस आजकल बदल रही हैं, सो दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. और जो ये आपने ग्रीन पैंट्स डिज़ाइन करने के लिए ऑफ कोर्स कुछ इनोवेशन लगाई होगी, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा. सो दिस इज डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली यू माइट हैव इन्वॉल्व्ड सर्टेन इनोवेशन. सो चैम्प्स, आई होप कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, एंड आई रियली होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने में. वन मोर थिंग आईड लाइक टू से इज दैट कई बार कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता. देयर कैन बी मोर देन वन आंसर्स इवन इन द की प्रोवाइडेड टू टीचर्स. CBSE क्लियरली स्टेट्स कि ये आंसर अगर बच्चे ने लिखा है तो भी ठीक, अगर ये लिखा है तो भी ठीक है, या एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट लाइक दे राइट. सो आपको जो लग रहा है राइट इट, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है. आई थिंक ये तो आप काफ़ी टीचर्स से सुनते ही होंगे, सबसे अपने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे, छोड़ के कुछ नहीं आना है. जो आपको लग रहा है लिख के आना है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली सही लिख के आओगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.